Hello and welcome friends to our YouTube channel Aryan Pharmacy Learning Center. In today's lecture, we are starting with our new topic from Medicinal Chemistry 1, that is sedatives and hypnotics. Actually these sedatives and hypnotics means actually we will talking about the definition of these sedatives. Sedatives are the drugs which induce the calmness to the patient. Okay, what is by sedatives? ऐसे drugs जो सिर्फ पेशेंट को calmness induce करेंगे without inducing the sleep. But what is actually meaning of these hypnotics? These induce the sleep as that of natural sleep. hypnotics क्या करते हैं, जो भी अपनी natural sleep होती है वैसे नेचुरल स्लीप प्रोड्यूस करने का काम हिप्नोटिक जो भी ड्रग है वो करते हैं. So in that, what is the basic difference between these sedatives and hypnotics? S and H, that is sedatives and hypnotics में क्या basic difference है? तो पहले हमने देखा कि these sedatives induce the calmness to the patient, while these hypnotics are responsible for inducing the sleep to the patient. Next difference is that these sedatives are slow acting in nature. These sedatives are slow acting in nature, while these hypnotics are fast acting in nature. That is the second difference between these sedatives and hypnotics. The third difference between these, एक्चुअली जो सेडेटिव जो ड्रग होते हैं वो हम नॉर्मली एंजाइटी के केस में देते हैं कि जब इस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एंजाइटी, देन यू विल प्रिस्क्राइब दैट पेशेंट पर्टिकुलर विथ दिस sedatives, while in case of hypnotics, अगर patient is suffering from the insomnia, then we will giving this hypnotics drugs. So what is this difference between this? The most important difference is this sedatives is giving in a low concentration, while these hypnotics are given in the high doses or high concentration, or dose is greater than these hypnotics dose is greater than that of the sedatives. Okay, so दोस्तों इसके अंदर जब मेडिसिनल केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो इसमें हम जनरली पहले क्या देखते हैं कि पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट हम परफेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि जो चैप्टर हमें पढ़ना है उसका मीनिंग क्या है, उसके बाद में उसकी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब हमें किस चैप्टर के लिए या किस मेडिसिन के लिए या कौन से ड्रग्स के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना. तो हमें जो सेडेटिव हिप्नोटिक जो चैप्टर है ये हम जनरली इंसोम्निया के जो पेशेंट होते हैं जिनको नींद नहीं आती, ओके, तो इन दैट केस हमें ये चैप्टर जो है ये पढ़ना पड़ता है. तो एक्चुअली दिस इंसोम्निया कैसे होता है वो हम पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की लेवल यहाँ पे कम होती है या ज़्यादा होती है. ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्यों है कि जब भी आप मोड ऑफ एक्शन जब पढ़ते हो तो आपको ये जो कंसेप्ट है इंसोम्निया का ये आपको आगे काम में आता है. जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो हमें कौन से मेडिसिन कब देना है या कौन सा एगोनिस्ट देना है, कौन सा एंटागोनिस्ट देना है, तो ये हमें पैथोफिजियोलॉजी के अंदर समझ जाता है. सो दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंसेप्ट, दैट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दिस इंसोम्निया. So actually in our body there is reticulate activating system is there which is present in the brain stem. Okay, हमें रेटिकुलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम अपने ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अवेकिंग. ओके, जो भी उठने के लिए या जागने के लिए हमें वो जो रेटिकुलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है. सो इट डज इट बाय, ये कैसे करती है जो रेटिकुलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम ये काम कैसे करती है. सो इट रिलीज बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर और वी कैन कॉल इट एज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर. ये कैसे काम करती है, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज करके अपना काम जो करती है. तो न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं, तो जनरली इसके अंदर एसिटिल कोलिन होता है, उसके बाद में नॉर एड्रेनालिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, हिस्टामाइन, दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर in which this reticulate activating system is releasing and then the awakening movement is happened. But on the other side similarly inducing the sleep, मतलब sleep induce करने के लिए there is one neurotransmitter we can call it as a GABA. Okay, this GABA neurotransmitter is released by this VLPO of the hypothalamus. This VLPO is nothing but ventral lateral preoptic nucleus. वहाँ से जो है जो अपना गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग दी स्लीप. सो गाबा इज द इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर फॉर दिस रेटिकुलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम एज रास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग दिस एक्साइटेटरी neurotransmitter. That's why to induce the sleep we have to increase the level of this GABA, or to release the GABA is important for inducing the sleep. But what happened in this case of insomnia? Actually in insomnia this the GABA level is get uh,
decreases. Okay, so deficiency of GABA is responsible for this anxiety, insomnia, and in some cases of epilepsy. Hence, uh, in this chapter we are treating this GABA agonist or GABA agonist हमें यहाँ पे देने हैं. तो to give this GABAergic system is an important treatment for this insomnia. So let's see the classification or which are the different types of drugs or chemical classification of these sedatives and hypnotic drugs, which is important for your syllabus point of view. So there are three types of drugs we are actually prescribing. One is benzodiazepine category of drug, second one is barbiturate category of drug, and third one is miscellaneous agents. So in that benzodiazepine there are again three categories: short acting, intermediate acting, and long acting. So in case of the example of the short acting is triazolam, intermediate acting is alprazolam and oxazepam, then long acting is diazepam. In case of barbiturate, there are four different categories: ultra short acting, for example thiopental; intermediate acting, that is amobarbital and butabarbital; short acting, that is pentobarbital and secobarbital; and long acting, that is barbital and phenobarbital and methorbital. In miscellaneous category, there are amides and imides category are there. For example, glutathamide. Then alcohol and their carbamide derivatives are there. For example, meprobromate or ethylpropionyl, or aldehyde and their derivatives are also included in this miscellaneous agent, that is trichlorosodium and paraldehyde. So see, this is somewhat theoretical part of these sedatives and hypnotics. Move towards the actual structures of this medicinal chemistry. So this is the different structures which are included in benzodiazepine category. That is, this is the structure of this benzodiazepine, this is the structure of diazepam, this is the structure of lorazepam. So next there are, this is the structure of chlordiazepoxide, then clorazepate, alprazolam or zolpidem. You can draw this structure in your notebook, so you can easily memorize the structure when you are looking it for. Then the next category, that is barbiturate. In that, barbital is the structure, then phenobarbital is there, methylbarbital is there, and amobarbital is there. The next, that is butabarbital. This is the structure of butabarbital. Then this is structure of pentobarbital, and this is structure of secobarbital. The next in miscellaneous category, this is structure of glutathamide and mepobromate. This is the structure of chlorovinol, trichlorosodium, and paraldehyde. So, so this friend, in this video, we are talking about the introductory part and somewhat classification of this sedative hypnotic drug and the different structure included in that. The most important point in this chapter is the structure activity relationship of this barbiturate and benzodiazepine. So in next lecture we will discuss about the structure activity relationship of this benzodiazepine. Thank you friends for watching this video. Thank you for watching this video, and sleep well. Thank you.